Good morning, students. I am VJ, and let's start the DJ of biology with VJ in New Digital Junction at New Digital Junction MentorJi. In previous lectures, we have discussed different aspects of nutrition, the difference between single and multicellular organism on the basis of diffusion, then the different in-text questions, the value of competency based questions, what type of questions can be asked on such topics. And now I am going to discuss photosynthesis with you. So let's start photosynthesis. Photosynthesis, that word photosynthesis derives from photosynthesis. Photo means self, and synthesis means preparation. Means process of formation of formation of food by using sunlight in presence of chlorophyll by taking CO2 and water as raw material. Here, this food is nothing but glucose, C6H12O6. So simply, this is the glucose which is prepared by this particular process, and that's a very common definition from the lower class. You has been learning such this definition from the beginning. So, as we have discussed in last class, that the stored food, if we compare in plants, that is starch, and stored food in terms of animals is glycogen. So let's talk about the overall equation of let's talk about the overall equation. So overall equation, if we take 6 carbon dioxide molecules, 12 molecules of water in presence of sunlight and chlorophyll. So there is formation of C6H12O6 plus 6O2, and there is 6H2O. So this is the overall equation, and on the basis of this equation, what can be the value points? The value points means the different question that can be asked in 1 mark. So you have to focus a lot in each and every value point. So first value point is raw material. So that's a very common question. What are the raw materials in this case? So raw materials are CO2 and water. In many books, raw materials are also given as a list
and these are sunlight and chlorophyll, but these are not under the raw materials. These are under necessary conditions. So these are under necessary conditions. So necessary conditions are sunlight, and second is chlorophyll. Listen this very carefully. Suppose you are preparing a tea. आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाते समय जो टी पॉट है, जो आपका गैस सिलेंडर है, गैस स्टोव है, all these are necessary conditions, but the चाय पत्ती हुआ आपका, पानी हुआ, दूध हुआ, ये सभी कहलाएंगे आपके रॉ मटेरियल्स। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉ मटेरियल एंड द नेसेसरी कंडीशन। थर्ड value point is the energy conversion. So regarding the energy conversion, you can say that uh, here is change of sun energy or sunlight or light energy changes into chemical energy. Another important point for board exam. Next fourth point, if we focus, the fourth point is the energy conversion के बाद that's also a redox equation. That also a redox equation. Redox का मतलब मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था, that is RED, that comes from reduction, and OX come from oxidation. So here both the process take place simultaneously. Hence, you can write like that, कि water is oxidized into oxygen gas and CO2 is reduced into glucose. So both the processes take place together, hence that is named as redox equation. Next value point is the significance. Significance of photosynthesis. So first significance as food. You know that all types of cereals, अनाज जिसे हम कहते हैं, fruits, vegetables, we can obtain from food. Food के तौर पर प्लांट से ही हम obtain करते हैं. Next, second significance is fixation of CO2. अब CO2 is a greenhouse gas, or if this CO2 will increase in this particular environment, so that will cause the global warming. So all the plants are valuable for us because they absorb or trap CO2 from the environment, and that is very necessary to maintain the equilibrium of environment. Whatever the necessary CO2 demand is required in the environment, that must be balanced. Third one is the life-saving gas, oxygen. Without this, we can't survive because this is the only gas we can respire, जिसको हम सांस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है. Next is the commercial products.
Commercial products such as gums, raisins, tannins, different types of medicines. आपने नाम सुना होगा, कोविड के टाइम पे बहुत चला था और अब भी चल रहा है। एलोवेरा है, अश्वगंधा है, आपका दालचीनी है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही हैं प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉसिल फ्यूल्स। And fossil fuels, we all know these, this is the crude oil, और क्रूड ऑयल से आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल, these two important fuels are there. These fuels are very necessary to uh, move our mobile, all type of mobility vehicles. So these are very necessary. So all these are the outcomes of significance of photosynthesis. Let's discuss the next. अब next आता है, what is the location of photosynthesis, where photosynthesis takes place. So photosynthesis takes place in chloroplast. This chloroplast you have done in previous class, जैसे आपने इसे नाइन्थ क्लास में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लेट्स रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ chloroplast. I am drawing the structure of chloroplast. In this we have the coin like structures. These coin like structure like that, जैसे आपके पास 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का हो और उस सिक्के को आपने एक के ऊपर एक रख दिया, तो सच कंप्लीट, दिस कंप्लीट पाइल, पाइल मतलब ढेर, ये पूरा का पूरा ढेर कहलाएगा ग्रेनम। एंड वन disc like structure is named as thylakoid. So this one disc is thylakoid. This one disc is thylakoid and this complete pile is named as granum. Similarly, if we connect these granum with each other, so these, that shows the connection, and these are stroma lamellae. These are the stroma lamellae, the connections between the granum. This is the ground substance, and this ground substance is stroma. So this is the main, and you can say this is outer membrane, and this is inner membrane. So these are the important labelings of chloroplast. So here, यहाँ पर एक और बहुत important बात है, between the membranes of thylakoid there is presence of chlorophyll. तो थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन के बीच में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है हमें? क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन यंग ग्रीन स्टेम, सेकंड इन गार्ड cells of stomata, and third is the leaves of the plant.
So these are the possible locations of chloroplast. That is the diagram of chloroplast. And here we discuss the location of chlorophyll. So three important value points we have discussed under this page. I think that is quite clear to you. Let's move to the next. So we have discussed what is the location of chloroplast. We have discussed what is the location of chlorophyll and what is the structure of आपका chloroplast. Next one is the mechanism or events take place during photosynthesis. Events take place during photosynthesis. Another very important portion for board एग्जाम, आप इसे मानकर चल दीजिए, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड. सो दैट्स व्हाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने 2024 लिखा है. अब इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट इवेंट. सो फर्स्ट इवेंट, ड्यूरिंग फर्स्ट इवेंट what will happen, as light rays fall on leaves, chlorophyll molecules get excited and there is release of electrons. So that is the first step. Chlorophyll molecules get excited and there is release of electrons. So here electrons will release. And second step, these emitted these emitted electrons split वाटर मॉलिक्यूल. वाटर को मैंने लिखा है यहाँ HOH, वाटर मॉलिक्यूल्स. These released electrons split water molecules, and these water molecules split into H plus ions and OH negative ions. So these are the two steps. Let's discuss the next. This third step is these OH negative ions combine to form water molecules again, along with release of oxygen gas, which is used by us for respiration. And this particular oxygen gas released through stomata. So this oxygen gas is released through stomata. Next is fourth point, if we discuss. So fourth, H ions बचे हैं अभी. These H ions reduce CO2 to form carbohydrate, and this carbohydrate is nothing but glucose. Now this is the last step. As this glucose is formed, दिस ग्लूकोज, अगर हम इन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने की कोशिश करें प्लांट्स, सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर is polymerized
to form a large molecule of starch, and that is made up of several molecules of glucose. Several molecules of glucose, and as we have discussed earlier, this is the stored for food form in plants. So these are four steps in your book. These steps are also given, that's in very simple way, but I elaborate these points to you more specifically. So first is absorption of light energy by chlorophyll. Second is conversion of uh, light energy by chlorophyll molecule. There is a splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, as we have discussed. Next, reduction of carbon dioxide into carbohydrates. So simple, these steps are also given in your book. If you write those steps, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे. और if you write these steps, these are very simple and elaborative, that makes your written value more. सो दैट इज द इवेंट्स. अभी तक हमने पढ़ा कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के क्या वैल्यू पॉइंट्स हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या हैं, कितने स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीड होती है. नेक्स्ट, ये जो हमने फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स डिस्कस किए हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल मोड. ये जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए हैं. Let's talk about the plants who are adapted for desert environment. So let's focus on that. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए. फोटोसिंथेसिस ऑफ desert plants. That's a very important point for your board exam. So this is the basic, this is related to this paragraph. So that's why I am indicating that. Please mark this, then I will proceed. So this is a very important. So let's start this. Photosynthesis in desert plants. अब डेजर्ट प्लांट्स के साथ दिक्कत क्या है, देखिए सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं. पहली प्रॉब्लम, ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट. ड्यूरिंग डे there is availability of sunlight, but stomata remain partially closed, hence no CO2. There is no CO2 क्योंकि पानी की कमी से बचने के लिए, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, दे remain their stomata closed. That's why there is no CO2, but there is availability of sunlight. So sunlight is there, but there is no CO2. Again, no photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस इस कंडीशन में प्रोसीड नहीं हो सकता. अब रात में देखें हम, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, but there is no sunlight. रात में सनलाइट पॉसिबल नहीं है. सो अगेन नो फोटोसिंथेसिस. सो हाउ दे प्रोसीड फोटोसिंथेसिस इन सच कंडीशन. दिन में ये CO2 की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, और रात में ये सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे. अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेजर्ट में प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं.
भाई खाना पीना तो सभी को चाहिए जिंदा रहने के लिए. सो व्हाट स्ट्रेटेजी दे डेवलप? सो लेट्स फोकस व्हाट दे डेवलप. सो these desert plants, जिनको हम जीरोफाइट्स भी कहते हैं, and these are also named as arid plants. So all these the meaning is same. Example हो गया इसका cacti. Cactus is the example. What their strategy? आपको मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताई कि इनके साथ दिक्कत क्या है. अब ये क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? सो ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट. अब इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है? लेट्स फोकस ऑन दैट. ड्यूरिंग नाइट, with the help of CO2, they prepare a intermediate substance, and that substance is nothing but aspartic acid or malic acid, and this is stored in vacuole. अपनी वॉक्यूल में स्टोर कर लेते हैं रात को ये. CO2 की हेल्प से दे प्रिपेयर intermediate substance, intermediate compound, that is aspartic acid or malic acid, and they store this malic acid in their vacuole. During day, this vacuole, during day, this vacuole से ये स्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड ब्रेक डाउन, दिन के समय ये टूट जाएगा, एंड रिलीज ऑफ CO2, and this CO2 is utilized, this CO2 is utilized to perform photosynthesis. So this is how they utilize the given adaptation around them, and वो अपने आप को लॉस ऑफ वाटर से भी बचाते हैं और साइमल्टेनियसली वो फोटोसिंथेसिस भी प्रोसीड करते हैं. So we have discussed so far the overall reaction of photosynthesis, definition of photosynthesis, different outcomes of photosynthesis. Those can be asked in your exam. Photosynthesis in desert plants. Let's focus on the next important point, and that is the cross section of leaf. Cross section of leaf. Cross section of leaf. It is also a good question. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके एग्जाम में. अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दिस there are there is a waxy layer, waxy cuticle. आप जानते हैं, नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसे. ये मोम जैसा एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, दैट इज अपर एपिडर्मिस. these are the these are basically the columnar cells. ये कॉलम लाइक सेल्स हैं और ये आपका ओवल शेप्ड सेल्स हैं. तो इन कलमनर सेल्स और ओवल शेप्ड सेल्स को, जैसे कि आप देख रहे हैं, हियर यू सी दीज आर द columnar cells, and these columnar cells are palisade parenchyma, and in these we have the in these we have
small round structures. These are nothing but these are क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ओवल सेल्स हैं इस तरीके से। तो इन ओवल सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट हैं, बट दीज, ये तो कलमनर सेल्स हो गई, कॉलम लाइक सेल्स। दीज आर ओवल cells, and these oval cells are spongy parenchyma, spongy parenchyma. And total means, if we palisade plus spongy parenchyma, total is named as mesophyll tissue. Here you also see that there is guard cells, but these guard cells, stomata, only you see in the lower epidermis, not in the upper epidermis. So that means, so in most of the plants, especially in dicot plants, you all know what are dicot plants, monocot or dicot. These are two different versions of two different types of एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के दो टाइप होते हैं। तो ज्यादातर मोनोडाइकॉट में लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और अपर सरफेस पर कम स्टोमेटा होते हैं, अगेन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। ऐसा ये इसलिए किया गया है, दैट इज द एडेप्टेशन फॉर व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज एक्चुअली द, अब आप देख सकते हैं, आपको दिखा रखा है, दीज ग्रीन डॉट्स cells organelles are chloroplast which contain chlorophyll। कहाँ क्लोरोफिल होता है ये मैंने आपको बताया, बिटवीन द वॉल्स ऑफ थाइलेकॉइड्स। सो अब इसी के बेसिस पर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 5.1 activity. So before starting this 5.1 activity, let's conclude what we have described so far in this video. We have learned about the photosynthesis, overall reaction, its definition, the value points of photosynthesis, different value points that can be asked in 1 mark question, how photosynthesis take place in desert plants, and the cross-sectional view of leaf. So इसी तरीके से बायोलॉजी को आसान बनाते रहेंगे, आपको नए नए चीजें बहुत इजीएस्ट वे में देते रहेंगे। सो आप बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए जुड़े रहिए वीजे से, और बायोलॉजी का डीजे इसी तरीके से बचता रहेगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। वी विल carry on another class in which we will discuss activity 5.1 later. So I am coming to you very soon.